Hello everyone, myself Captain Pankaj Sabharwal, Master Mariner, Merchant Navy, and today I have made this video is a compilation of a lot of videos and photographs which I've taken during my ship inspections and from my archives. The videos will give you a nice informative pictographic view of different parts of ships, not limited to bridge, main deck, cargo holds, forecastle deck, mooring winches, windlass, aft mooring stations, galley, mess room, smoke room, bridge, engine control room, ship, ballast control panel, and other locations. I hope you will find this information good, interesting, and if you have any doubt or any thing you need to ask about Merchant Navy, how to get into Merchant Navy, various institutes around India. If you have any doubt, anything you want to ask, you can write in the comment section or you can email me on my email address, which is mentioned in the details below. Also, you can connect with me on WhatsApp. Thank you. Hope you like this video. Operation, deballasting operation, bilge stripping, all done from here. This is the main ballast pumps, valves, opening, closing, indicators, ballast pump starting, fire and GS pump starting and stopping, the valves, indicators. Then we go here, the bilges, all bilges, strips and forecastle, forepeak store, coastal store, white space, and now comes the main ballast tanks, opaque, DB1, topsides, DB centrals, all mentioned here, and the ballast water treatment system is here. Yeah guys, now we are on the aft mooring stations. So we're gonna make a quick video of the aft mooring stations and what do we have in the mooring stations. There's a lot of sound behind, and we're gonna understand winches, bits, bullocks, eyes, rollers, ferry rollers, and how do we operate it. So this is the aft mooring wind station.
There's a very nice ship right there. I want to show you that also. थोड़ा देखेंगे मूरिंग स्टेशन के बारे में. Winches. These are drums. These are the braking system. This is the drum for heaving up or lowering the lines. Wrapping drum. काफी शोर है इधर. पीछे में इंजन का शोर आ रहा है उसके पीछे से. और ये देखेंगे mooring systems. इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट ऑपरेशन. थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्रिटिकल होता है. और रोप जो है यहाँ से निकल के सीधा पीछे जाती है ऑन द हो गई हमारी रोप्स आगे. अब ये है रैट गार्ड्स. इनका काम होता है कि चूहे जहाज पे ना आए और जट्टी के जट्टी पे रहे, जहाज के जहाज पे रहे अगर जहाज में है तो. These are the rat guards and these are the stern lines 1, 2, 3, 4 and these are the two breast lines of the spring, how they have used it. And you have to make fast them either on the drum like they have been tied, उनको ड्रम पे टाइट करके रखा हुआ है, या फिर उनको इन बिट्स के ऊपर बांध देते हैं. इनको हम बिट्स बोलते हैं. अब इनको इन बिट्स पे बांध देते हैं. और इसको भी बांधने का एक वे है MEPG4 बुक के थ्रू. MPEG4 जो बोलते हैं 4 एक MEG बुक होती है, उसके थ्रू हम लोग इसको पढ़ते हैं कि इसको कैसे बांधना होता है. सो ये लाइव एंड है. लाइव एंड को फर्स्ट बिट पे आना होता है और 2 चक्कर मारने होते हैं. 2 चक्कर मारने के बाद फिर हम उसका फिगर ऑफ 8 बनाते हैं. सो दिस इज अ फैमिलियराइजेशन वीडियो. एक फैमिलियराइजेशन वीडियो है हमारा जो विंचेस का है. और विंचेस की पावर ऑन कहाँ से होती है, ये रहा. यहाँ से विंच की पावर ऑन होगी. तो विंच पावर ऑन इज फ्रॉम हियर. और पीछे में स्टीयरिंग गियर रूम है, वहाँ भी हम बाद में जाएंगे. सो विंचेस फॉर यू. थैंक यू. So I hope you like the video. Please share, subscribe, and if you need any specific video, please come back to me. I will try my best to make as informative video as possible. Thank you very much. Captain Savarwal. Bye-bye.